You are watching Travel World Online. Travel World Online TV organized from 3rd to 5th of March Film Tourism Conclave 2021 on a luxury river cruise Antara and at Rajbadi Bawali, a 300-year-old iconic heritage property. The conclave was a wonderful initiative to bring in popular media like cinema, television and tourism together in these difficult times as the economy and enterprises need a much-needed boost. Good initiative after COVID, and I think since you are talking about synergy, it's very important after COVID that we learn to cooperate and collaborate in such a way that 2-3 industries come back to normal and flourish. Number one, tourism industry. Second is cinema. It's very important that cinema survives and thrives. Cinema halls, especially Akshay is here. They run a very big, in Chhattisgarh they run a big chain of theatres. Rathi Group, अगर आप जानते हो तो ये चलाते हैं उसको. और we have to look at how travel and cinema are so interconnected with each other, because once you, suppose I shoot a film on this right, then imagine how many people start coming to this cruise. And it's not about just people coming, it's not a footfall, but the ancillary industries, all kinds of ancillary industries, you know, the kind of employment it creates. Also, we also have to now look at this entire cinema and tourism collaboration from a very different point of view. So far, India is a country of 1.3 billion people. We are a unique country. We are perhaps the only mystic country in the world. We are the country which the world is looking for now, the spirituality and all. But we never used these two industries as soft power. Industry and Hollywood, these three industries got together and used it as soft power. Now tourism and cinema, both are wars are not going to be fought. Supremacy is not going to be done with the help of guns and tanks. It's going to be done with the soft power. And it's very, very important that we start doing that. Now today, if you ask Indian places, very rarely they talk about Indian places. If you talk about the best monuments in the world, they talk about the monuments of the world, not Indian monuments. You know, now the problem is that we have not used our cities, our places as soft power. We have never looked at ourselves as soft power. So it's a good attempt, and he runs a very good digital travel this thing, and I think it's our duty to support their digital site also and promote India. I'm very proud of India, and I think I'm one of the most intensely traveled person in India. I travel all the times. I mean, I'm traveling all the times. मैं कल सुबह यहाँ से जम्मू जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा, फिर कहीं जाऊँ. तो मैं घूमते ही रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, I try to go and figure out places जहाँ लोग जाते नहीं हैं. इतना खूबसूरत है इंडिया, इतना अच्छा है, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कि इंडिया. I need many lifetimes to explain the beauty of India. But beauty lies in the eyes of the beholder, how we are going to look at it. As long as we are going to be awestruck with things which are outside India, then we'll end up, our cinema is going to keep promoting them, their power as soft power. So, like Chhattisgarh, Raipur is such a beautiful place. It's emerging as the Naya Raipur, wonderful places. Chhattisgarh has great places. So I think it's on our duty. Thank you very much for inviting us here. I wish you guys all the best. Thank you, sir. Now I request you, sir, to start with the presentation. Film shooting is about, I think, छत्तीसगढ़ का परसेप्शन जो बना हुआ है नेशनल मीडिया के, कई सारे मेरे मुंबई के फ्रेंड्स और बाहर के फ्रेंड्स, उन लोगों को ऐसा फील होता है कि एयरपोर्ट से निकलें और माओइस्ट नक्सलिस्ट उठा के ले जाएंगे वहीं से. तो वो परसेप्शन वहां के अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस अभी भी एक्सप्लोर करने बाकी है उस वजह से. जैसे ये टैगलाइन है, लैंड ऑफ फुल सरप्राइजेस, ऑल्सो दैट ए लैंड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस. अभी तक बहुत सारे ऐसे प्लेसेस. असल में फिल्म के लिए चाहिए क्या? If you think from the that perspective, history, culture, और आपका जो बता रहे खजुराहो लोग बोल गए हैं, खजुराहो से पुराना मंदिर भोरमदेव, that is in
छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है। बस्तर का एक बहुत ही खास जगह है चित्रकूट। अभी कभी आप लोग गूगल करिएगा कि भारत का नियाग्रा, मतलब जो सबसे चौड़ा वाटरफॉल है चित्रकूट, जो साउदर्न पार्ट है छत्तीसगढ़ का, 3 पार्ट में हम लोग जनरली बांटते हैं। नॉर्थ पार्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ पार्ट में एक ऐसा जगह है मिनी तिब्बत। मेरे ख्याल से इसको नेशनल मीडिया को भी हाईलाइट करना चाहिए। आप लोग वहां जाके तिब्बती कल्चर को देख सकते हैं। तिब्बती लोग आज भी उसी तरीके से रहते हैं। गवर्नमेंट उसके बारे में उसी कंडीशन में उनको अभी तक रखी हुई है। बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं और वहां पे मेन पार्ट पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब बियॉन्ड फिजिक्स है। आपको एक जमीन मिलेगी जो जलजली है, उसका वीडियो अगर होता तो मैं दिखाता, सर शो कर देंगे। आप वहां पे चलिएगा तो जस्ट लाइक गद्दा जैसा फील होगा। वहां एक प्लेस है जो लद्दाख में एक प्लेस है, उस टाइप का है। पानी लगभग 184 मीटर उल्टा बहता है, उसको उल्टा पानी जगह बोला गया है। मूवी सबने देखा था, उसमें एक बहुत बड़ा झरना था। उसका थीम कहां से आया था? ये तीरथगढ़ झरना। बेसिकली ये छोटा है, लेकिन जो उनको जो एक थीम मिला था वो यहीं से मिला था। हमारे पास एक केव है, प्रोड्यूसर केव। वर्ल्ड में कहीं अंधी मछलियां नहीं मिलती हैं, अंधी मछलियां यही मिलती हैं। शंकरा ओलाई जिसको खोजा गया था, मतलब इवोल्यूशन के दौरान मतलब उनका आंख डेवलप ही नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके की भी चीज है। बेसिकली परसेप्शन ये है कि नक्सल क्षेत्र में है, लेकिन आम पब्लिक हो, पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, उनको नक्सलियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स पर अटैक करते हैं। अगर नहीं, अभी सर रिमोट एरिया में ये चीज होता है, रिमोट एरिया में होता है। क्योंकि मेरे खुद की जो बहनोई है वो हार्डकोर नक्सली क्षेत्र में सीएसपी है। उन लोग का तो ऐसा है कि निकलने से पहले एम्बुश रोड ओपनिंग पार्टी चलता है। हम लोग जाते हैं, फ्रीली चले जाते हैं क्योंकि सिविल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको रोड ओपनिंग पार्टी के बाद ही जाना पड़ता है। कुछ ऐसी जगह है जिनको एयरलिफ्ट करके लाया जाता है, एयरलिफ्ट करके छोड़ा जाता है। आप बस्तर आप फ्री होके घूमिए, सिविल कपड़े पे, बाइक पे घूमिए, बस पे घूमिए, आपको बहुत सारी कुजीन मिलेंगे। कुछ इस तरह के कुजीन है, जैसे लाल कलर की चीटी होती है उसकी चटनी, हड़िया शराब, जो सिर्फ वहीं मिलेगा आपको। जो कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं अफ्रीका जाते हैं ट्राइबल कल्चर को देखने, पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ नहीं आते। मे बी परसेप्शन की वजह से। क्राफ्ट की बात करूं तो जो हमारा साउदर्न पार्ट है, पूरा बस्तर रीजन पूरी तरीके से मतलब उनके क्राफ्ट उनके लाइफ का ही पार्ट है। कोंडा गांव में आपको डोगरा कला, गढ़वा कला, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है उनका। मोम से वो मोम का कलाकृति बनाकर मिट्टी में दबाते हैं और कोई भी धातु को पिघलाकर उस पर डालते हैं और वो शेप में बन जाता है। Friends, our objective is when you sail with us or travel with us, can we make a difference to your travel experience? And we do that in 3 ways. Number 1, we take you to untouched destinations. As you have slow food like sustainable, local, organic, wholesome, similarly you have slow travel. So slow travel is a very immersive form of travel, जिसमें हमारी तो गति इतनी स्लो होती है because हम रिवर के ऊपर जाते हैं, and our top speed is 10 knots, which is 15 kilometers an hour, and that's my comment that the cycle can go faster than our ship. But every second your riverscape is changing, and there is so much to see when you travel on a river cruise. River cruise is a very new concept. For India, though definitely it's a new concept, but even it is for the evolved traveler. Now I'll come to on the shooting part of it, and as the fraternity is here, there was a movie, आपने जिंदगी ना मिले दोबारा की बात करी, एक और भी थी दिल धड़कने दो, जो एक क्रूज पे थी, and cruise tourism really went through the roof.
Obviously they were all international, दोनों movies international shoot हुई हैं, लेकिन अभी this Antara Cruises has been voted as the 6th best river cruises experiences in the world, and we've been operating for the last 6 years. We've been only selling to international guests because we never had space. Thanks to COVID, we have space on it, and now and we have been making more and more ships. So we have 2 identical ships like this. हमारे बिल्कुल सोनू और मोनू हैं यहाँ पर. Ganges Voyager 1 and Ganges Voyager 2. You're on 2. So 28 suites can accommodate 56 guests, और हम 2 डायरेक्शंस में जाते हैं. अभी हम कलकत्ता में बेस्ड हैं, बट बड़ी जल्दी आप सुनेंगे कि हम एक उड़ीसा में आएंगे, हम गुजरात में आएंगे और मध्य प्रदेश में आएंगे. इस साइड जाएंगे तो आप बे ऑफ बंगाल है, जिसमें हम सुंदरबंस की हमने पिछले हफ्ते ही एक सेलिंग कंप्लीट की है. ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी. Obviously, you can't get off the ship because it's a protected forest, but it is so remarkable. And we had a full house, and obviously it's a pricey ship. So I asked most of the guests, and they're very devout travelers, कि आप इसमें क्यों आए? वो कहते हैं कि before this world ends, or before these things get destroyed by humans, let us see them. And this side, if you go, which is Upper Ganges, we go up till Varanasi. There is a very popular itinerary that we have. It's called Europe on the Ganges. जब मुगल यहाँ पे रूल करते थे तो उन्होंने जिसको भी यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत थी तो उनसे परमिशन लेते थे. सो यहाँ पे बैरकपुर का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक ब्रिटिश सेटलमेंट थी, जो बहुत बड़ा ब्रिटिश कंटोनमेंट है. उसके बिल्कुल सामने एक जगह है सेरामपुर, जहाँ पे डैनिश आके सेटल हुए और उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई जो बाइबल छापने के लिए. उसके आगे चंदन नगर एक जगह है जिसको शैंडोनोगो बोलते थे पहले, क्योंकि वो फ्रेंच सेटलमेंट थी. अभी वो चंदन नगर से जाना जाता है. और उसके आगे जाए चुनसरा विच इज डच, और उसके आगे जाए तो बैंडल जहाँ पे पोर्चुगीज आए और उन्होंने पहली चर्च बनाई यहाँ पर. सो दैट आइटनरी as you sail through the river, because they were all along the sides of the river, so as you sail through the river you can see remnants of Europe, and hence the itinerary is rightly titled as Europe on the Ganges. If you go further down, there is Mayapur. Mayapur is the seat of ISKCON movement, and this is where they are building the largest ISKCON temple in the world, which will be bigger than Vatican. But do you stop in all these places? We stop in all the places. आप सोचिए ये हमारी गाड़ी है, हम कहीं भी रोक सकते हैं इसको. And typically, obviously, we like to stop at places which are of interest. But we have guests when we charter the boat, we sail along this way. तो इसको जो करने का मकसद है, हमारे यहाँ पहले फिल्में जो बनती थी, आप इस बात से एग्री करेंगे कि फिल्म के एंड में एक थीम होता था कि फिल्म से हमने सीखा क्या, मिला क्या. आज कुछ नहीं है. हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, मनी मेकिंग की बात कर रहे हैं. और किसी भी देश में जब तक आपको प्राउड डे होगा आई एम एन इंडियन, वो जो फीलिंग है वो खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम. हमारी फिल्मों ने भी बहुत बड़ा रोल जो अदा कर रहा था, कहीं खो गया है वो. एंड टुडे दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि हम अपनी जड़ों को वापस जोड़ें. जो मेरा इंडिया, मेरा घर, मेरा शहर, मेरी संस्कृति जो खो गई है, इसको लौटाने की कोशिश करें. द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, टूरिज्म अपने आप बढ़ जाएगा. टूरिज्म ऑल अबाउट कल्चर, experiences we are talking about, history we are talking about. मुझे आप क्या कहेंगे? इसमें ना बहुत बड़ा रोल है राइटर्स का. अब राइटर्स ने दिल से लिखना बंद कर दिया, पैसे के लिए लिखने लगे. पहले लेख लिखते थे, कलम की ताकत वो है जो तलवार नहीं कर पाए वो कलम कर देती थी. तो मुझे लगता है कि अगर हम सब में से कोई एक इस पूरी मीटिंग से एक चीज हल्की चली जाए, पॉजिटिव वाइब चली जाए, तो मेरी मेहनत सफल चलिए हो जाएगी. मेरी जाने हो जाएगी. मिस्टर पराशर, आई वांट यू टू से समथिंग. No, I need you there, please. I have to come there? Yeah. I think Vivek said everything very well. The
soft power of Bollywood is so incredible that the people sitting in Delhi and other people don't even realize what it is. We made one film called Kashmir Ki Kali and the tourism went through the roof. Kashmir was introduced to India. Sometime back, US Embassy called me out of the blue and said, we want you to talk, come and give us a lecture on the soft power of India. So I went there. And I don't know how many people have been to the US Embassy. It's a whole city. It's got palm trees and school inside, and they take away your phone and everything else. They've got soldiers inside with machine guns. They all look like American heroes. So they take you to a basement, and then I spoke about the soft power of India. So I asked them, why do you want me to talk? They said, because there are small films like Secret Superstar and Amir Khan films and all that, which are beating Avengers. So how is Bollywood, which has got songs and it has got a family system and it has got religion in it, and the Chinese 66% do not believe in God, I think you know that. Why are they flocking to these movies? And Amir Khan is not Tom Cruise. So ये कैसे 2000-3000 crore का धंधा कैसे कर रही है? So they were worried about the soft power of Indian cinema taking over Hollywood. I mean, वहाँ तक उनका fear चला गया था. So then I spoke to Niti or people and I said, भैया तुम लोग कर क्या रहे हो यार? You have to encourage Indian cinema, because if you go to Egypt, there are people there learning Hindi to understand Hindi pictures. Shah Rukh Khan is big in France, and we can take over. Hollywood today, the American का जो हुआ है, that is because of Hollywood. Because of the westerns and because of the kind of spies and action and all that. So there, America is sold as wow, fantastic, because of how Hollywood is presented. And here we are making maximum movies in the world and our government is not supporting us. We are the only people who have got this ridiculous tax system which is 50% tax and all kinds of things. So my prayer is that Bollywood can promote India in such a way. China has got a soft power of pandas. I mean, silly thing like little cute animals they export, and the soft power that now they've got football players from there to encourage football to take over the football. Momentum. And I was put on the board, and the CM called me, later Parikar called me. I was on stage because I made a funny action movie because it was based in Goa. So Goa became famous partly on not being there, and now I think 25 movies are shot every year in Goa. So Chhattisgarh can be great. No, because we know it is beautiful, it is close to India, everything. Your presentation was nice, by the way, since you came at the last moment. So we can, actually, इन्होंने बोला तो हमने छत्तीसगढ़ में पिक्चर प्लान की, फिर उन्होंने अपने बोट के बारे में बोला तो हमारी स्क्रिप्ट चेंज होकर बोट में आ गई. Because he gave such a good presentation on the boat. So, the soft power, and give us subsidy. It's a rich state, you have got a lot of money, give incentive, you be there. Mauritius is giving 35% citizen. You know, there are the Italy is giving a lot of, Georgia is giving, so we all go there. Huh? It's straight trade, it's straight commerce. You call us, you give us part of this money we spend back to us, and people will come. Thank you. Now the ship is moving, we can go out and buy. Thanks a lot. I'll ask Akshay to tell us what is haunting the industry. What kind of problems we face? Please. For being here. It's truly a pleasure being with all of you and coming here to attend this summit. Thank you for the presentation. So Chhattisgarh is a state that we operate in with our cinemas. So very close to heart because we have been present there before Chhattisgarh became Chhattisgarh. When it was Madhya Pradesh, so we've operated there for about 50 years. And therefore, it's given me the opportunity to visit the state many times. And I've always believed that Chhattisgarh has, since its formation, been a very business-friendly state. But somehow, among the businesses like iron rolling and a whole lot of other things that have, done really well, I guess entertainment is one sector that has, for a fairly long period of time, not got the attention that it deserves. And with the richness that the state offers in terms of locations, in terms of business opportunities, I think a lot can be done. All of us from the entertainment industry, of course, like in any other business, would look for opportunities
where and it's not just about the money. Of course, money and incentives and rebates are something that counts. But the other thing that really matters is the convenience of being able to shoot there. So various parts of India, if you look at it, a single window, something as simple as a single window clearance for shooting, something like infrastructure which really makes a big difference in terms of availability of equipment, availability of hospitality, availability of catering partners, a whole lot more. If all of that can be simplified, I think business can, progress in a big way. So I truly hope that the state of Chhattisgarh and various other states who are looking at film tourism can offer, besides financial incentives, the incentive of convenience. That I truly believe can boost business, and that can also boost, the sector, the entertainment sector. Making a film today is not a cheap process. Of course, if you look at the bigger films, the budgets run into hundreds of crores. And any kind of support, of course, financial support gives that direct financial benefit. And the support of convenience also helps you save money. So all of this put together, in what ultimately is a business, can really ensure symbiotic growth for tourism and for entertainment. So I truly hope to see that happen. And Chhattisgarh, like I said, we are, at some level we are on the same side because we operate in Chhattisgarh, and I'd love to see entertainment as a sector really go and boost there. Thank you. I believe हम सबको, and most of us, love a serial called, मुझे सिर्फ उल्टा चश्मा याद रहता है. So I'll request him, the producer is with us. Please come and say a few words. तमें कुछ बोलना है? गुड इवनिंग. बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ के बारे में आपका प्रेजेंटेशन देखे. लेकिन एक बात बहुत दुख के साथ कहता हूं कि हमारा शो के ऊपर जितना एब्रॉड से जो इंक्वायरी आता है कि आप हमारा कंट्री का प्रमोशन करो, इतना इंडिया से नहीं आता है. हमारा डेली शो है, एवरी डे शूटिंग होता है, तो बड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ होता है. हमारा छुट्टी नहीं होता है. पल्लवी जी को मालूम है कि डेली शो कैसे रन होता है. तो उसी की वजह से हम जा नहीं पाते हैं. सिंगापुर में हमने शूट किया, उन्होंने हमको सारा फैसिलिटी दे दिया. क्रूज में गए, डिज्नी हांगकांग, वहां पे हमने शूट किया डिज्नी पार्क में. तो वहां पे पहली बार ऐसा हुआ वर्ल्ड में कि डिज्नी ने अपना पूरा जो पार्क था वो इंडियन टीवी सीरियल को दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इसका कितना इम्पैक्ट है. सिनेमा का एक अपना चार्म है. टेलीविजन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका ड्राइंग रूम में होता है, तो आप फैमिली के साथ इंस्पायर होते हैं. फिल्म का एक अपना चार्म होता है, लोग देखना चाहेंगे, हाँ यहाँ पे शूट हुआ है तो चलो, अगर फिल्म अच्छी लगी तो वो लोकेशन एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है. लेकिन जो हमारी टूर ऑपरेटर भी वही काम करता है जो एक मोटा मोटी लाइन प्रोड्यूसर करता है कि सबको रहना किधर है, सबको खाना पीना किधर है, ट्रैवल कैसा है, शूट कैसा होगा. तो आपका भी रोल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है. ये नहीं कि शूटिंग हो गया बुला लिया, ऐसे नहीं होता है. तो ये हमको कंफर्ट नहीं मिलता है. और दूसरा, जो छत्तीसगढ़ के ऊपर अगर आप इतना ये प्रमोट कर दे तो टूरिज्म का एक अलग से सिक्योरिटी बनाई है. क्योंकि अभी हम वहां आएंगे तो कोई एक आर्टिस्ट बोला अभी भाई डर लग रहा है, जैसा अभी कोविड की वजह से लोग तुरंत उधर भी डर लगता है कि नक्सलाइट एरिया है. मैंने कभी एक छोटा सा एक फिल्म था जो थोड़ा फाइनेंस किया था, जो छत्तीसगढ़ में शूट हुआ, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर पे शूट हुआ. वो फार्मर का स्टोरी था. तो इतना हम लोग वो लोकेशन एक्सप्लोर नहीं कर पाए जो आपने दिखाया, क्योंकि स्टोरी का डिमांड नहीं था. लेकिन ऑफकोर्स हम सबको करना चाहिए. जैसे अरुणाचल प्रदेश के सीएम का भी प्रेजेंटेशन था, उन्होंने बहुत कि आप हेलीकॉप्टर में आओ, मैं सब दिखा दूंगा. बाय रोड तो जाना बहुत मुश्किल होता है, पूरा अरुणाचल को कवर करना.
लेकिन बाद में वही होता है कि वहाँ हमको गाइड कौन करेगा? हम तो आगे देख के निकल गए, फिर हमारी पूरी टीम होती है, हमारा भी एकदम शादी जैसा माहौल होता है, सब अपने अपने मूड में रहते हैं, कॉस्ट्यूम से लेके सारी चीज। कुछ एक छोटी सी चीज, अगर गुलाब का फूल चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो शूटिंग रुक जाती है। तो सारी चीज का कंफर्ट चाहिए। तो मैं ये भी बोलूंगा कि आप भी शूटिंग को थोड़ा समझिए, सब लोग, खास करके टूर ऑपरेटर की वो लिंक है। Hi, I'm Priyanka Nijhavan. I'm the director for Nijhavan Group. My company is primarily into hospitality and tourism, looking after some key brands all over the world, including Dubai Tourism, Address, Armani, Maldives, etc. So the first part of the question, Anilji, that you asked me is that, what has been my experience in, in reaching a certain position. I think one of the key things is that, for me, I was luckier than a lot of others because I came from a family where my father was very progressive, and he always, he could see the spark in me. He wanted me to study, and there was no stopping. Even 20 years back when I wanted to go to London, because for him, he did not, he wanted to encourage me in whatever I was doing. And then, of course, when I got married, I had a family with my husband and my father-in-law, again, having the same belief. Having said that, of course, the family support has been there and it has been very important. But at the same time, I think as a woman, we always have a lot of challenges. There is, no matter how progressive everybody is, the society is patriarchal and there are a lot of expectations on the home side. So the juggle between home and work is always a struggle. There is never a perfect balance. The perfect balance has still not been achieved. I think it's all about prioritizing. There are times when the kid is unwell or has an exam, then that takes supersedence about over everything. Or there are times when there is a road show and I have to be there. Then at work, then that is something which is non-negotiated. I think what is important here is to be very passionate about what you do, and that is what drives you to do your best to work everything around. My message, like you asked me earlier, for the women out there, I think I will have a message for women more my age group, which is the 40 pluses, who are the ones who are currently working. They've broken the glass ceiling, and of course there are a lot of us who along the time have dropped in the pipeline, when the pressures became too much, when the kid came into class 10 or class 12, or and or a parent or a parent-in-law fell ill. So my message for all of us would be that we must hang in there. There are tough times that come. So tough times don't last, tough people do. And as us who are slightly older, we need to be the role models, and we need to actually be grooming the younger generation of women, because I think it is very important, besides what we do for the well-being of everybody else, to have our own identity, to definitely not lose ourselves in, for everyone else. And sorry, and the third part of the question, you'll have to repeat, Anilji. You're mute. What is the need of the hour to empowerment women, the governments and individuals? So I think, COVID in a way has actually, ended up being as a boon to all of us, because this work from home concept is definitely going to be
helping women in the long run, and we are going to be able to bring more women back into the working society. I think the need of the hour is to have more facilities around women. We've brought up women, who are well educated, who are talented, but the ecosystem is so many times not very supportive. Offices won't have creches. Earlier we did not have so many options of work from home, which have now thankfully come up. On the government level, I think. There are efforts which are continuously being made where X number of women need to be on the board, etc. But I think we'll have to kind of get a little more serious than that and literally say that if there is a certain percentage of women workforce in the office, then the company will get a higher tax rebate. So that is something which will really encourage women. But I think the work from home, which is a post effect of COVID, is definitely going to help us women in the long run. सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम रुपिंदर ब्राड़ है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैगी हाँ। इस वेले मैं नवी दिल्ली च हैगी हाँ और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ 8 मार्च 2021 ਅੱਜ इंटरनेशनल वुमेन्स डे ਲਈ स्पैशल मैसेज देना चाहनी हाँ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, स्पेस भी जा रही हैं और हजे घरां च भी काम कर रही हैं, ऑफिस च भी काम कर रहे हैं और असी अपने बच्चे भी पाल लेने। आई थिंक दैट्स वेयर जिहड़ी नारी शक्ति हैगी है, दैट्स हर शक्ति, दैट शी हैज दैट एबिलिटी कि वो सारे स्पैक्ट्रम दे जॉब्स कर पाती है। वो अज भी घर आए हर बंदे का भी ध्यान रख लेंदी है, उन्होंने रोटी खवा देगी, गिफ्ट्स भी देगी, एंड एट द सेम टाइम वो कंट्रीज दी प्रेजिडेंट्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने और हर तरह के रोल्स प्ले कर रही हैं। और साइंटिस्ट भी हैगी हैं, देयर आर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, वी हैव किरण मजुमदार शॉ इन आवर कंट्री एंड सो मेनी लाइक हर। संगीता रेड्डी जी हैगे ने, शी इज लीडिंग अपोलो हॉस्पिटल्स, एंड देन देयर आर सो मेनी वुमेन अराउंड इन द वर्ल्ड who are doing phenomenal work. So on this International Women's Day 2021, मेरी सारी अपनी भैणां बच्चियां नूं यही है कि गुजारिश कि अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास रखो और अगे वधो। और सारे जिहड़े आदमी सुन रहे हैं इस मैसेज नूं, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ भी मेरा यही मैसेज है कि अपने जीवन च जुड़ियां होईयां सारियां औरतां नूं इनकरेज करो, सपोर्ट करो और उन्होंने होर अगे वधन दी अपॉर्चुनिटीज दो, बिकॉज सारे इकट्ठे मिलके जे दुनिया नूं अगे लिजावांगे तां ही ये दुनिया सोहनी बनेगी। इस करके ये नौरियांग अरिदे नारेश्वर ये सारे कॉन्सेप्ट हैगे ही इस करके ने दैट द वर्ल्ड इज गुड इफ इट इज बैलेंस्ड। So let's have the men and the women together in making sure that 2021 and all the years to come are beautiful years for everyone. Thank you very much. You are watching Travel World Online.